Better, let's talk about age distribution now. Age distribution क्या है? The age distribution of any population, it is given by a list of proportion of that population in different age group. List of population. Age distribution list of population. I'm not writing the complete sentence. क्या है ये बेटा? It is given by list of proportion of population in different age groups. In different age groups. माने, what does it mean? For example, if I go ahead and tell you, देखो, age 0 to 10, this much percentage of people are there. 10 to 20, this much percentage of people are there. तो अगर मैं आपको यहाँ पे age और यहाँ पे population percentage दे दूं एक कंट्री का, है ना? तो this is telling the age distribution of the country. ठीक है? So now one thing that you have to understand is that when we talk about developing countries, so in the developing countries, beta, we see that there is high birth rate, high death rate as compared to developed countries. Abhi in the last session we talked that when birth rate will be high, it will mean that you will have more young population. Younger population will be higher, है ना? So age distribution of developing country, अगर हम developing country की बात करें तो developing country की age distribution, it is younger as compared to developed country age distribution. ठीक है? As compared to developed country age distribution. ये बात समझ में आती है? ठीक है. अब जैसे हमने अभी तक हमने क्या बोला था, अभी हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि birth rate and death rate, they can go ahead and they can affect, वो affect कर सकते हैं किस चीज को बेटा? Age distribution को. So birth rate and death rate, they can affect the age distribution. यही तो हमने देखा भी कि जब birth rate high होता है तो fertility base high होता है, fertility base high होता है तो younger population ज्यादा होती है. So till now we have seen that birth rate and death rate can basically go ahead and it can affect the age distribution of any country. It can affect the age distribution of any country. But अब हम कह रहे हैं that along with this there is another thing, that age distribution, it can affect birth rate and death rate. Age distribution भी birth rate और death rate को affect कर सकती है. कैसे? क्योंकि अगर age distribution, देखो just खुद से सोचो, हाँ, कि if I have a country जहां पे there are more people in the age group of 25 to 35, इसका percentage बहुत high है, that means इस country का fertility base will be high, and if fertility base will be high तो birth rate automatically high होगा. और अगर एक कंट्री है जिसमें 80 प्लस पॉपुलेशन का परसेंटेज बहुत हाई है तो ये these people have to die ना, अगर even if you give them the best medical facility, एक एज के बाद people will die. So यहाँ पे death rate automatically high होगा. So basically age distribution, how the age distribution of any country is, it will affect what will be the birth rate and death rate of any country. ठीक है? तो अब हमने क्या सीख लिया बेटा? We have learned that birth rate and death rate, it will impact the age distribution of any country. ठीक है? And age distribution of any country will also affect the birth rate and death rate. So it's a cycle. ये बात समझ में आती है? Okay. So birth rate कैसे affect करते हैं? It is affected by age distribution, age specific fertility rate and fraction of people in different age group. तो कैसा एज डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर डिपेंड करेगा कि बर्थ रेट कितना होगा. क्या ज्यादा लोग इस एज ग्रुप में हैं या इस एज ग्रुप में हैं, दैट विल अफेक्ट द बर्थ रेट. ठीक है? एंड इट विल ऑल्सो बी अफेक्टेड बाय एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, कि उस एज में
फर्टिलिटी रेट कैसा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा देर आर कंट्रीज वेयर डेवलपिंग कंट्रीज वेयर पीपल गेट मैरिड एट द एज ऑफ 18 19 ऑल्सो, तो उनका फर्टिलिटी बेस उस एज का रहेगा. बट देर विल बी कंट्रीज इन विच पीपल विल गेट मैरिड लेट, उनका मैरिज ही 27 28 में होगा. सो इफ दे गेट मैरिड लेट तो उनका फर्टिलिटी बेस वाला जो एज ग्रुप है दैट विल ऑल्सो बी लेट, right? And there will also be decline in the fertility because of biological factors, because of the reasons that after a age it is difficult to conceive. Are you getting it? तो माने हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि what is the age distribution, how many people in how many this, but also what is the fertility rate in that age, depending on when people are getting married and what is happening. ये समझ रहे हो? On all these factors we will have it will affect the birth rate. Similarly, the death rate will also be affected by age specific death rate. अब कुछ कंट्रीज हैं जहां पे बहुत जल्दी people die, they die by the age of 50 55, and there are countries where people live till 80 also. So what is the age specific death rate of that country? एक एज ग्रुप में how many people are dying, and of course overall age distribution. अब अगर एक कंट्री ही ऐसी है जहां पे एज डिस्ट्रीब्यूशन में मोर पीपल आर 80 प्लस, तो ऑफ कोर्स दीज पीपल हैव टू डाई, राइट? तो डेथ रेट विल ऑटोमेटिकली भी हाई. तो हाउ इज द एज डिस्ट्रीब्यूशन और एज स्पेसिफिक डेथ रेट कैसा है, बोथ विल गो अहेड एंड अफेक्ट द डेथ रेट. इज दिस मेकिंग सेंस? ठीक है. Now we introduce another term which is called as age specific fertility rate. ये मैं आपको बता चुकी हूँ. Number of children per year born to women in a particular age group. तो हम क्या कर देते हैं ना, that we find out that ठीक है, in the age group 18 to 25 how many children are born to women, right? In the age group of women 25 to 35 fertility rate क्या है? So we are finding the number of children per year born to women, but we are also connecting it to a particular age group. We are also connecting it to a particular age group. ठीक है? And total fertility rate क्या होगा बेटा? Very simple. आप इन age specific fertility rates को if you add them out, then you will get the total fertility rate. So total fertility rate can be found by adding up all the age specific fertility rate ओवर डिफरेंट एज ग्रुप. अलग अलग एज ग्रुप्स में अगर हम एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट को ऐड कर देंगे, वी विल गो अहेड एंड गेट द टोटल फर्टिलिटी रेट. इज दिस क्लियर? सो टोटल फर्टिलिटी रेट इज टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन वुमेन इज एक्सपेक्टेड टू हैव इन द लाइफ टाइम. ये हो गया उस एज के दौरान में उसके कितने हो सकते हैं. और टोटल फर्टिलिटी रेट यू कैन राइट डाउन, इट इज the number of children a woman is expected to have over her lifetime. Over her lifetime. ये बात क्लियर होती है आपको बेटा? Okay. Now, when total fertility rate increases, there will be increase in the birth rate. Of course, if you will have more number of children in the lifetime, then birth rate will be high. Automatically birth rate will be high. ये समझ में आता है? ठीक है. But total fertility rate, it is not the only factor that determines the overall birth rate. सिर्फ fertility rate birth rate को नहीं affect करेगा. ठीक है? Birth rate तभी भी अफेक्ट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंट्री. जैसे समझो बात को, एक एग्जाम्पल देते हैं बेटा. देखो यहाँ पे, दिस इज कंट्री ए, दिस इज द सेकेंड कंट्री. ठीक है. नाउ आई एम सेइंग दैट इन कंट्री वन, कंट्री वन में व्हाट इज हैपनिंग इज that there are 1 lakh women in the age group of 18 to 25. ठीक है बेटा. कंट्री 2 में there are 5 lakh women in the age group of 18 to 25. कंट्री 1 में birth rate is 3 children per woman.
in 18 to 25 एज, एंड डेथ यहाँ पे बर्थ रेट is 1 child per women. ठीक है, तो बेटा एक बात बताओ, हाउ मेनी चिल्ड्रन विल बी देयर इन कंट्री 1 lakh women, every woman will have 3 children, so 3 lakh children. ठीक है, इसमें हाउ मेनी चिल्ड्रन विल बी देयर बेटा, देखो 5 lakh into 1 child, तो इट विल बी 5 lakh children, more children. तो इवन दो यहाँ पे फर्टिलिटी रेट इज लो, बट फर्टिलिटी बेस इज हाई. बेस माने कितनी विमेन है यहाँ पे इन दिस एज ग्रुप. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सो फर्टिलिटी रेट इज लो. लिखो ध्यान से, देखो यहाँ पे फर्टिलिटी रेट मीन्स हाउ मेनी चिल्ड्रन विल बी बोर्न, लो, बट फर्टिलिटी बेस हाई. समझ रहे हो? फर्टिलिटी बेस इज हाई. क्यों बेस हाई है? क्योंकि यहाँ पे ये यंग विमेन ज्यादा है, और यंग विमेन ज्यादा होने का मतलब व्हाट इज इट, दैट देयर इज मोर यंग एज पॉपुलेशन, है ना, देयर इज मोर यंगर पॉपुलेशन. सो इन यंगर पॉपुलेशन, जिस कंट्री का यंगर पॉपुलेशन ज्यादा होगा, even though they can have low fertility rate, still they can have more birth. Why? Because of the younger population, because of more younger population. ठीक है, because there is more population in the reproductive age. reproductive age के अंदर जो population है वो ज्यादा है. right? is this clear? इस चीज के साथ साथ एक और चीज है प्लस. अब क्योंकि यहाँ पे यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, इट मीन, एंड यंग पीपल आर नॉट वेरी prone to death as compared to old people. So in this population, it will happen that there will be more younger population in the net place. net माने अगर हम इन young population में से कुछ लोगों, even if some people die, even if there is death among young population, तो भी overall net young population will be high in this country. ठीक है, young population is biased towards low death rate. उनका death rate comparatively कम होता है. तो even if I eliminate that fact कि हाँ ठीक है कुछ लोग का death भी तो हो सकता है, after also overall net young base will be high in this country, है ना. तो if young base will be high, तो there will be more reproductive age. मोर रिप्रोडक्टिव एज माने हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट, क्योंकि ज्यादातर तो यंग पॉपुलेशन है, वो तो इतना जल्दी दे विल नॉट डाई, तो बर्थ रेट विल बी हाई एंड डेथ रेट विल बी लो. ठीक है, बट दिस इफेक्ट, अभी आई विल रीड इट आउट ऑल्सो, बट दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज एन एको इफेक्ट. इसको हम क्या बोल देते हैं, एको इफेक्ट. एको इफेक्ट सेज दैट इवन इफ योर फर्टिलिटी rate is low, still you can have high population growth rate when, कब होगा ये बेटा, it will happen when your population is younger, when you have high base, young population ज्यादा होता है ना, and this is called as population having high amount of inertia. क्या बोल देते हैं हम इसे, दैट द पॉपुलेशन ग्रोथ पोजेसेस इनॉर्मस डिग्री ऑफ इनर्शिया. पॉपुलेशन पोजेसेस इनॉर्मस डिग्री ऑफ इनर्शिया. ये समझ रहे हो? अब ये वाली कंट्री जो है, ये अपने पॉपुलेशन को कितना भी नीचे लाने के लिए कोई पॉलिसी क्यों ना ले आए, राइट? ये कोई भी पॉलिसी ले आए कि वी वांट टू लोअर द पॉपुलेशन, तो बेटा यहाँ पे तो फर्टिलिटी रेट पहले ही लोअर्ड है. तो पॉलिसी जैसे इंडिया में आया था, हम दो हमारे दो, है ना, तो ये क्यों था, दैट वी वांट टू लोअर द पॉपुलेशन. ठीक है, बट इवन द फर्टिलिटी रेट इज लो, यू हैव ब्रॉट दैट पॉलिसी टू लोअर द फर्टिलिटी रेट. आप वो पॉलिसी लेकर आ चुके हो, बट तो भी पॉपुलेशन साइज ओवरशूट करेगा ही. पॉपुलेशन साइज विल ओवरशूट. व्हाई इट विल ओवरशूट? क्योंकि बेस ही हाई है, नंबर ऑफ पीपल हु आर गिविंग बर्थ आर हाई, राइट? सो बिकॉज पास्ट में पॉपुलेशन हाई था,
तो पास्ट में बर्थ रेट हाई रहा, वो जो पीपल दोज हु वर बोर्न वो सब अब यंग हैं, एंड देयरफॉर अब फर्टिलिटी रेट लो होने के बावजूद, इवन इफ फर्टिलिटी रेट इज लो नाउ, it is going to go ahead and it is going to mean that there will be more people who will be born. Is this clear, beta? So there are more people who are about to get married. There are more people who will form family. There are more people who will have children, even though the rate is low. हर परिवार में एक ही बच्चा आ रहा है. Every person is just one person. But the number of families that are being formed, they are high. समझ रहे हो? So there will be an echo effect that will take place. ये बात समझ में आई पूरी कहानी? Let's read it out. A young age distribution implies low fertility rate. If productive base is high, so birth rate can still be high due to high fertility base. Base high hai. This is called as enormous degree of inertia. Despite low fertility rate, you will have high birth rate. Fertility rate to low hai. Fertility rate is low, but you will have more birth in that country. ठीक है. So when you have high birth rate and high death rate, it means that there is more young population. It creates enormous degree of inertia. इस पूरे इफेक्ट को बोला जाता है echo effect. ये बात पूरा क्लियर हो गया बेटा? echo effect क्या है कि क्योंकि पहले बर्थ इतने हाई हो गए, बहुत सारे लोग पैदा हो गए, तो अब वो सारे लोग यंग जनरेशन में आ गए हैं, अब उनकी शादी होंगी, मोर पीपल विल बी बोर्न. इवन आप फर्टिलिटी रेट लो भी कर दो तो भी पॉपुलेशन हाई जाएगा. देयर इज एन एको दैट इज क्रिएटेड. एको इफेक्ट. बर्थ रेट इज मोर देन डेथ रेट. ये मैंने आपको बताया कि यंग पॉपुलेशन में डेथ रेट उतना हाई नहीं होता, बर्थ रेट हाई है, तो नेट नेट मोर पीपल आर बोर्न. Population size would overshoot the desired limit before setting down to an acceptable level. तो आप कोई पॉलिसी ले भी आओ, you bring in some policy, then also वो पॉलिसी फायदा ज्यादा नहीं कर पाएगी. पॉपुलेशन ओवरशूट करेगी ही करेगी. पॉपुलेशन विल इंक्रीज. पॉलिसी विल नॉट बी वेरी यूजफुल इन दैट केस. देयरफॉर पॉलिसी मे नॉट सक्सेसफुली रन इन द शॉर्ट रन. ये बात समझ में आई बेटा? सो दिस इज अबाउट द एज डिस्ट्रीब्यूशन. ओके बेटा.